today's session is about most asked front-end interview questions. So basically, we have targeted these questions primarily for freshers kind of people who are, you can say, just saying an inclination towards a front end. Like if you are saying, okay, I am a Java expert, or I just want to go into Java, or I am just want a, ML or AI kind of answers. So those questions may not be very relevant. This is for the front end or full stack, or someone who is showing their experience in React through some projects. So this session is more helpful for those kind of people. So that's anybody has any questions so far, like confirmation. So this first is most asked front end interview question. So first of all, I would like to say there are some basic questions that we should be always aware of, irrespective to the technology what we are talking about. Like we should be, if I say I know Java, I know JavaScript, I know HTML, I know CSS, I know C++. So if I should, you should be able to ask what is difference between C++ and Java if you are writing the resume in, if your resume has both the languages. So it's like you should be a basic knowledge. So when we come to the front end, we have three parts here: HTML, CSS, and JavaScript. So first of all, you should be very aware of what is an HTML, what role it plays into a web development, or what is a CSS and what role it plays into a web page, and what is in JavaScript and what role it plays into a web development. So it's like a basic knowledge. What is the role of JavaScript or HTML or CSS in a front end page? If I show you a page, you should be able to recognize, okay, this is because of JavaScript, this effect is coming because of JavaScript, and this is because of HTML, and this is CSS. So that is like basic understanding. And if you say like how, what is JavaScript, how you are how you compare it with Java or other languages, what you like in this, what you do not like it, what you find weird, what you find very simple. So these are like very basic questions that anyone who is saying I have worked on it or I have created a project should be able to, answer this. So right now we will now dig down into the question. So the questions like is very basic questions. What is DOM or document object model? So this is a very basic question of JavaScript. Basically not a JavaScript, I would say. It's a question of front end web development. If you are running a JavaScript and that is running on Node or backend, so it may not be very relevant for the people who are saying we are a Node expert and we are in Java. But who is saying I'm a front end development? So this is a very important question. So, like what is DOM and what is document object model? So like I think most of you would have already some idea of this. Yeah. Can you, do anyone has any idea like what is DOM and what exactly it means? Am I going fast? Okay. So DOM is basically called document object model. This is something has to do with HTML. It has nothing to do with JavaScript or CSS. So document object model means how our HTML is structured. So what we, whenever we have a page, it is actually a hierarchy, or you can say a tree of HTML elements, which at the top we may have a HTML tag, then we have a body, header, and those all tags. So this all is called a document object model. So it's basically a tree which is representation of a page, and this tree is nothing but a hierarchy of all HTML tags. So based on, what is there on the screen, it may be a simple tree with 4 or 5 childs, and it may be a deeply nested tree with first like HTML, then headers, then body, then in within body we can have divs, then within divs we can have like ULs, LIs, and then spans and that all. So basically it's nothing but a tree structure that is representing the how the HTML elements are placed within an web page, and it is purely a HTML concept. It has nothing to do with JavaScript or CSS. But JavaScript surely can manipulate the DOM, or we can have some dynamic, you can say, enhancements on the DOM using JavaScript, or we can manipulate
or we can have some effect on DOM, basically which are visual effect using CSS. So this is basically a DOM is. So do you have any questions right now on DOM, like what is DOM, or it's clear, like it's basically like whenever we type a create a HTML page, we type tag inside tag, or tag sibling to tag, like li are siblings, and ul is a parent of li, like unordered list, I mean to say. When I say ul, I think most of you understand it. And then li is list item, and those all are siblings. So when we put it as a tree, that is called DOM. That is very simple. So anyone has any questions? Like if someone wants to me further explain it. And this is a very, one thing that you will and listen, or you will hear it, like DOM events, like when DOM is loaded, when DOM content is loaded, when DOM is ready. So these are like DOM events that are primarily. बता रहा हूँ, मतलब एरिया की बात रहती है तेरे यहाँ, तो ऐसे 50 लाख वाले बहुत होंगे. Hello, am I clear? Anybody has any question or something that I'm not able to clear it? Hello. No, sir, not right now. I guess we can take the questions after one language. Okay, sure. Now can you move to the next slide, Umang? What are all tags? Do all HTML tags have an end tag? Can anyone answer it? Like what is what? So the answer is simply no. This is basically, we can say, do all HTML element have an closing tag? So most of the HTML element have closing tags. Some of them are self-closing, and some of them are not self-closing. Like div is not a self-closing tag, while image is a self-closing tag, and few do not have a closing tag at all. Like br is one of the examples. So when we say self-closing, it means to say we have a corresponding enclosing tag of it. Like br is closed by a, like we have div, then we have to open it, then we need to close the div at the same time. Then we can have a content in between those two divs, and closing and opening tag. So basically, this is like a very straightforward and simple question. Yeah, Uman, can we go to next slide? Okay. Yeah. How do we create a hyperlink in HTML? Okay. So like hyperlink is primarily like a very common functionality when we try to navigate from one page to another page. So we create hyperlinks, or it may not be actually the another page. It may be on the same page in some other section or with something else. So it's like navigation, basically, we can say. It may be on a same page, it may be on a different page, it may be on a same website, it may be on a different website, it may be on a same page at different, like we might have seen it, like go to bottom, like arrows are there. When we are at the bottom, then we can see an arrow on the website. When we click it, we go to top. So these are like anchor tags. These are like hyperlinks where we can navigate through the website from one page to another page, within the website, within the page, and that all. Like most of the small websites are like, they have different sections, and those all sections are like we can know we navigate directly from, if I want to go to directly contact us from top, I can go to contact us, that is at the bottom of the page. Or I can go to carriers, there are tags, there are as buttons kind of thing, or we can say nav bar in more technical language. So these are like hyperlinks. So the question is, how do we create an hyperlink? So with the anchor tag, we can create hyperlink, and we have an attribute that is called href. Within href, we can pass the where we want to navigate with this anchor tag. So we can pass, a reference to our own HTML page. We can pass to a reference to a HTML page that is hosted by our server only.
but that is not the same. Or we can pass a hyperlink to, you can say, to a different website, and there are also attributes like where we want to open a website to on a new HTML tab, or even a new browser window we want to open. So those are like where we can configure this anchor tag. So we use primarily anchor tag in a website or multi-page application. This is primarily not relevant in single page applications, but in multi-page applications we use anchor tags to navigate. And the simple way to create is anchor, and with an href tag just we provide where we want to navigate. Yeah, hope. Yeah, Umang, you can go to next slide. Okay, this question is how many types of heading does an HTML contain? So this question is very simple. It has six tags: H1, H2, H3, H4, H5, H6. But like I would like to add something here that is very so. Anyone think of like why do we have these many tags when we can have a heading simply by a bigger font size and making it bold? Like if I want to create a heading, I can just create a you can say one heading or one label. We can just bold it. We can increase the font, we can bold it, or we can use CSS or those all stuff attributes to make the heading. But we have 6 heading tags in HTML, and that is very easy to replace with some CSS font size and that all. But why do HTML provide us this all? Can anyone think of like this? What is the need of that all? And why HTML is there? Why do we have so many tags when we can have just work with div and few basic tags? Like if you see the code, most of the people are coding few basic HTML tags. We do not use those all tags. So the basic idea of HTML is semantics. When we semantics mean to say something that is, it should have some meaning within HTML. So if I see something in H1 tag, I should able to I should able to conclude, or I should able to understand it. It's a very big heading at a top level heading or a main heading. And when I see something within an, you can say a H6 tag, I know it's a heading, but it's not so important, or it's at a lower level. Like within a page we may have a lot of headings, like page main heading, then a sections heading, then within a section we have a list, then the list heading, and that all. So for that all purpose we have these 6 kind of headings, which actually is for the semantics. Like we can have everything within a div, but we have paragraph tag like p tag, because that is something we want to adhere with the semantics. Like it has this meaning, this is a paragraph. Everyone who is actually seeing that code, he should be able to understand it. If we talk about the SEO and those other things, that a web browser is able to make a sense of it, that okay, this is not actually a simple division, but it is a paragraph that I need to render. Like we have article tag. So that's why we have these 6 tags, and these 6 tags have different their importance in the page. So we can do that way, but that is not the best practice or the recommended way. That is just we are not utilizing our semantics of HTML. If we go ahead with one HTML tag and we just highlight the font and or font and bold it, or font size using for those, use those for the heading. Yeah, we can go to next slide. Okay, what do you Yeah, understand by universal selectors? yeah, So मनोज जी 1 minute. Yeah, anybody if has any doubt please ask. आप पूछ hmm, सकते हैं, no uh, issues, any language, हिंदी इंग्लिश. और अभी आप सब ने HTML पे थोड़ा बहुत काम किया होगा तो आई थिंक आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे. So please ask whatever you doubt you have. This is like most ask interview questions. So मनोज जी is very expert, है ना. तो आपको जो भी doubts हैं you can ask. Chat पे भी डाल सकते हैं. तो yeah, just give me instant feedback. yes.
That will help me to actually improve. Means just I just want it to be a dialogue kind of thing instead of a monologue. Like I have just instead of going through the slides, if you can also add a lot of value. Mm, okay. So anyone has any idea like what is a universal selector? Why do we need it? Okay, if I ask you a question, do different browsers have different behaviors or different default settings? If I ask a question like, okay, if I have a page, like simple HTML page or a div and that then content on it, do different HTML, different browsers will render it bit differently? Like, have you noticed like if we have an input, like if I have an input in a form, then that looks different on different browsers. कल को अभी ट्राई करके देखना, आप एक HTML पेज पे एक ऐसी फॉर्म बना के देखना कि जिसमें कुछ भी CSS VSS नहीं है, खाली प्लीज इंटर योर नेम और एक इनपुट बॉक्स और दूसरा प्लीज इंटर योर password or email ID and try to render it on HTML in you can say Chrome or Edge and then Firefox or Safari. So there should be slight difference, I would say. Different browsers have different styles, default styles, I would say. So universal selector is something that is primarily used there to reset all default browser settings. So like if for a div, there may be different, like if I say base font, if you do not provide font, every browser will, you know, render in some default font size, I would say. So what is that? That may be different for different browsers. So if I want to, initiate it with 0, or if I want to override all default browser settings, then generally we use universal selectors to reset everything to default. So this is basically the universal selector's main job. And primarily अगर आपने कभी देखोगे CSS में तो सबसे ऊपर ऊपर जो भी CSS होती है उसमें लिखा होता है स्टार एंड देन margin 0, padding 0, this 0, that 0. So that all is basically a universal selector. Universal selector means I am going to select everything instead of a particular instance or a particular element or a particular, you know, based on a particular ID, particular class or a particular type. So it's like I am going to default select everything and reset everything to something default. So this is called universal selector. Primarily star is what is used as a default selector. Like for class and we use something different, for ID we use something different. The star is the one that is used as a default selector. About the slide. So first of all, I would like to, you know, if, what is CSS? CSS stands for cascading style sheet. So everyone knows this. So primarily, if I ask you, what is the purpose of CSS in a web development? Why do we need a CSS? Or what is the use of HTML? What value the HTML adds to a web page, and what value the CSS takes add, and what is the JavaScript that all adds to the value. So now if I talk about CSS, so CSS is all about, you can say, how I want to display a element. For example, you might have seen a lot of buttons. जैसे आपने बहुत सारे बटन्स देखे होंगे, हर बटन अलग अलग किस्म का होता है. Like for example, you can many times with seeing the button you can say कि ये error का बटन होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है then I need to click this button. I think just by seeing that you can like you can get a feel of it. Like a green button is always for the success kind of things. Red button or a orange button is always something that is like a danger or something went wrong kind of thing. So this all is comes from a CSS. So CSS is how we want to display these things. Like if you we have different fonts and how do we choose that font, how do we arrive for a different font, and how do we combine the fonts, how do we combine these colors like background colors with the foreground, I would say font colors or the text color, that all compare
then or contrast, and those all things are because of CSS. So it's about how it should be on a web page. It's CSS. HTML is basically about the structure. Like I should have a header, I should have a footer, I should have a division, then I should have an article, then I should have an image, then should have a caption below image. So this all, how a document should be. Or I should have a heading that should be H1, then below that I should have a, less significant heading that is H2. So that all is HTML. So the HTML is all about semantics and structure. CSS is all about how it should be on the screen. It should be green, it should be yellow. When I hover on it, it should, display some prompts, or it should change the color so that I should be able to understand it. So CSS is all about that. So this all is coming from the CSS and should always come from the CSS. So that is basically the CSS. And if I talk about like JavaScript is primarily about behavior. So yeah, you can go ahead with the next slide. Okay. What is the difference between class and ID selector? Okay. So like we have talked about the universal selector, that we talked about the star, and we said, like I told you, like a star is primarily when we want to select all. But what if I talk you about, like I have a button, like 5 buttons in the same category, which are more or less trying to do a success kind of thing, which are showing me. But based on different pages or different content, they have different, you can say, labels and bit different style. But overall, their generic, purpose is to show the success, or to show everything is going fine and it's okay. And then I would say I have a very specific button that has a very different purpose to go ahead kind of thing. So how we can select a group of buttons or a group of same elements? For example, how can I? So this, for these things we have class and element attribute. So class is basically a general purpose grouping of any HTML elements, we can say. So we can give them same class and we can apply same CSS to the class. So if I I give them same class, then I can write the class with dot. So the dot is the class selector. So if I can start a class, and then in CSS I can write dot, like success button, and then I can, yeah, this is using dot symbol, and then I can say class is equal to class name, and in this way we can have multiple classes. Oh, sorry, we can have multiple classes, and at the same time I can have multiple element having same class. For example, we have some paragraph. We can apply a class to those all paragraphs by using a paragraph class. That is basically class when we have to group different items within same umbrella, because they fall, or they you can say follow same semantics kind of thing. We want to have them same look and feel. So this is about the class. Now the second is ID. So when I want to specifically target something, like a specific button, like a specific heading, like a specific animation for something that is very specific to only one, that is very important. It has to be, specific to one. So then we can use the ID. Then within the HTML element we can provide a attribute that is called ID, and in CSS we can provide it, or we can select it using hash, then the ID name. So this is basically ID and class selector. So ID is hash and class is with dot, and then we can write our CSS. So this is like a important beginner thing. Like if you say I have done a project in, like most of people I have seen, they have done in project in MERN or those all stuff. So this you should be able to, convey, or you should be knowing that. I'm not sure if someone will ask you or someone will not. So this is an important question, like important thing to know. I would, rather than an important question, I would say it's also a very important thing to know, an important basic thing to know.
what is a block element, what is the inline block element, and what is a block element. So I would say like you might have seen like बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसा, जब स्टार्टिंग में कोई CSS लिखते हैं तो हम जैसे हम div होता है, हम div बनाते हैं हम, तो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा पेज का जितना भी विड्थ होता है ना वो पूरा ही घेर लेता है। कभी आपने किया होगा ऐसा ऐसा सब, आप चाह रहे हो कि आधा ही विड्थ घेरे पेज का, लेकिन वो क्या करता है पूरा का पूरा फैल जाता है बेसिकली डिव्स के साथ है जैसे, जनरली यही लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। प्राइमरी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जितना भी इसको विड्थ मिलता है पेज पे ये सारा का सारा कवर कर लेता है प्राइमरली। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विड्थ और हाइट से उनको कुछ लेना देना नहीं होता, वो जितना उनका कंटेंट होता है ना वो उस हिसाब से स्पेस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पैन देखा होगा, स्पैन के अंदर जितना कंटेंट होगा वो उतना ही लेता है, ऐसा नहीं कि वो पूरे का पूरा विड्थ घेर लेगा पेज की। फैमिली आप आज करके देखना, अगर मतलब कभी किया नहीं किसी ने तो, एक आप डिव लोगे तो जितना भी बड़ा पेज का विड्थ होगा ना वो सारा का सारा पेज का विड्थ घेर लेगा। अगर आप उसके बाद नीचे कुछ और दूसरी चीज लिखोगे तो वो उसके नीचे रेंडर होगी, वो उसके नीचे दिखेगा न कि उसके बगल में। वो पूरे, तो ये चीज जो पूरा का पूरा पेज घेर लेते हैं ये कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली। ये पूरा का पूरा पेज घेर लेते हैं, बट विद इन CSS, विद CSS वी कैन स्टाइल देम आल्सो, बट प्राइमरी इज दैट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। और जो इनलाइन है जितना उनका कंटेंट होता है वो उतनी ही जगह घेरते हैं, जैसे कि स्पैन एक एग्जांपल है इसका। ओके, so this is primarily block and this inline block is they may take height and width. We can modify them with CSS, and we can have some CSS applications on them. That is not that is basically inline block elements. We can have like tables, and those all are inline block elements. Yeah, you can say like an inline in a very simple language. You can also say कि ये जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो दूसरी लाइन से शुरू होते हैं, उसका अगला वाला दूसरी लाइन से शुरू होगा। दैट इज लाइक ऑल्सो राइट थिंग टू से, बट ज़्यादा लेमन टर्म में हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जितनी पेज की विड्थ होती है वो सारा का सारा घेर देते हैं। दैट्स इट। So you can go to next slide. Okay, so this is about JavaScript. ओके, तो जैसे कोई जावास्क्रिप्ट कहेगा ना और कोई कहेगा कि मैंने जावा पे भी काम किया है, मुझे जावा मैंने काम तो नहीं किया, मतलब मैंने जावा भी पढ़ी है, मैंने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी है। तो एक बेसिकली जो डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट का, कभी ध्यान दिया होगा या कभी सोचा होगा तो जावा में क्या होता है, कोड लिख देते हो, फिर कोड लिखने के बाद कुछ और ही फाइल बन जाती हैं, जार और इस तरीके की फाइल, फिर वो फाइल्स डिप्लॉय होती है, मतलब वो फाइल अलग ही होती है, कुछ वो कोड की फाइल नहीं होती। बट जावास्क्रिप्ट में जो फाइल आप होती है ना वो कोड ही होता है उसमें। वो बात अलग है कि वो ऐसा हो सकता है कि कोई से पढ़ ना पाए, कोई समझ ना पाए उस कोड को, उसको मिनीफाई कर दें, उसको इतना अगलीफाई जिसे कहते हैं बेसिकली, तो किसी की समझ में ना आए बेसिकली, बट वो लिखा कोड जावास्क्रिप्ट ही होता है, वो फाइल .js ही होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर किसी मतलब एक सामान्य लेमन में हम किसी को समझाना चाहें कि यार क्या होता है, तो जैसे C++ ये सब बिल्ड होती हैं, ये सब क्या होता है, इनकी एक बिल्ड बनती है, बिल्ड बनने के बाद एक अलग किस्म का कोड फाइल बनती है जावा में या जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। HTML वैसे का वैसा ही रहता है, CSS वैसे का वैसे ही रहता है जैसा कि हम लिखते हैं, बट ये हो सकता है कि उसको उसके सारे कोई व्हाइट स्पेस हटा दे, उसके सेलेक्टर्स हट इस तरीके से उसको अगलीफाई कर दे कि कोई उसे पढ़ ना सके। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसे कहते हैं इंटरप्रेटेड एंड पीछे जिसे कहते हैं कि हम ये इंटरप्रेटेड है या कंपाइल्ड है। तो ये जावा जो है कंपाइल होती है इस तरीके से। तो जावा स्क्रिप्ट ये नहीं, तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली जैसे पुरानी पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था, अभी जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते जावा स्क्रिप्ट को बेसिकली कि ये HTML पेजेस के लिए ही है। राइट नाउ जावा स्क्रिप्ट जो है बैकएंड सर्वर पे भी चलती है। तो जावा स्क्रिप्ट एक चीज अलग हो गई एज ए कोर, एज ए लैंग्वेज। हाउ वी यूज इट ऑन अ फ्रंट एंड इज अ डिफरेंट थिंग, नॉट वेरी डिफरेंट बट अ डिफरेंट थिंग, लाइक, or how we use in a
यू कैन से नोड और बैकएंड इन्वायरमेंट, दैट इज अ डिफरेंट। तो ऐसा भी है कि ये जिस इन्वायरमेंट में रन होती है वहाँ पे ये थोड़ा अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अगर आप ये, जैसे हम कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट से हम कोई क्लास ऐड कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या इस तरीके से, वो सब फ्रंट एंड का फंडा है, वो सब एचटीएमएल में ही होता है। बैक एंड पे वो सब नहीं चलता। बैक एंड पे कुछ अलग चीज़ें चलती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में नोड पे आप देखो तो फाइल सिस्टम और वो सब होता है, वो सब बैक एंड की चीज़ें हैं। तो बेसिकली एक इन्वायरमेंट पे भी जावास्क्रिप्ट डिपेंड करती है कि क्या करता है, क्या करता है। ये कोड रन, ये ब्राउजर में भी रन हो सकता है, ये बैकएंड सर्वर पे भी रन हो सकता है प्राइमरली। जावास्क्रिप्ट इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, बेसिकली इनहेरिटेंस जो होता है जावास्क्रिप्ट में भी होता है, primarily through a prototypal inheritance, that is like if you are more experienced then people will ask you। और अभी कोई ऐसा भी कह सकता है, जैसे सिंपल सा सवाल होता है जिसे कई बार हम भी पूछते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में भी हम अब आजकल क्लास लिख सकते हैं, जैसे सी, जैसे जावा में लिखते हैं उसी तरीके से क्लास लिख सकते हैं, बट अंडर द हुड दैट इज सेम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, वो दैट इज जस्ट अ सिंटैक्टिकल शुगर। मतलब हम वैसे लिख तो लेते हैं बट सिस्टम जो है बेसिकली उसको फिर से वैसे ही कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ऑल अबाउट। so we can move to next slide। so you should be knowing like how it is different for other languages। when I ask people, I they कहे कि मुझे जावा स्क्रिप्ट भी आती है, मुझे जावा भी आती है, तो मैं सबसे पहले यही पूछते हैं कि यार अच्छा क्या लगता है, फिर क्यों लगता है, क्या ऐसा जावा में है जो इसमें होना चाहिए, क्या जावा में ऐसा नहीं है जो इसमें उसमें होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट में नहीं। तो ये बेसिकली एक कंपेयर कॉन्ट्रास्ट जो चीज़ें हैं वो यू शुड बी एबल टू से कि मुझे जावा में ये अच्छा लगता है, या जावा स्क्रिप्ट इज लाइक फंक्शनल लैंग्वेज, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। कई लोग कहते हैं मुझे क्लास अच्छी लगती है जावा की, वो उसमें बहुत ही अलग ही मतलब मज़ा आता है लिखने में, इसमें क्लास नहीं है। तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर कॉन्ट्रास्ट एंड पुट योर पॉइंट्स फॉर योर स्टैंड। बेसिकली जब आप कोई एक दो लैंग्वेज और कहते हैं, द डाटा टाइप सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट आर undefined, null, boolean, string, symbol, number and object। so these are like data types supported by by javascript। so, yeah, so there is a question sometimes people ask you from this one, what is difference between null and undefined? so it is like undefined is something that is, and there is something called not defined. There are three things I would: undefined, not defined and null। so undefined is like we have started, like हमने एक वेरिएबल शुरू कर दिया, like I said var a और let a, बट हमने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो हम आगे को उसकी वैल्यू जब भी हम चेक करेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगी जब तक हम उसे वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। एंड नॉट डिफाइंड इज लाइक हमने ए डिफाइन ही नहीं किया और हम उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड नल इज लाइक आई हैव स्पेसिफिकली गिवन एन एम्प्टी वैल्यू। तो एक प्रोग्राम के, जो एक प्रोग्राम द्वारा दी जाती है किसी चीज को एम्प्टी वैल्यू से नल कहते हैं, और जो वैल्यू सिस्टम और ये जावास्क्रिप्ट अपने आप में किसी चीज को दे देती है उसे कहते हैं अनडिफाइंड। so that is basically the main difference between undefined, null and not defined। that is like a basic question so that you should be knowing। yeah, you can move to next slide। Guys, you can ask any question if you have, you can write in the chat box। अगर आपको टॉपिक से अलग भी कुछ और क्वेश्चन है फ्रंट एंड के इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड आप पूछें, क्योंकि टुडे वी हैव एक्सपर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड, तो आप फ्रंट एंड का कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। okay, so this is like my favorite question, like कॉलेज स्टूडेंट्स कि क्या जावास्क्रिप्ट के सेंसिटिव है या नहीं है। so this is like answer is yes, javascript is case sensitive। so if you like type like a test as a variable capital or you lower or camel case, those all are different things। so this is yes, javascript is case sensitive and you should know it, it's just a fact kind of thing, nothing to explain।
That is a very important question. So this is like what are the scopes of variables in JavaScript. So like अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो दैट इज अ लाइक इट्स अ इवॉल्विंग लैंग्वेज ना, जैसे कि कल तक जो होता था लाइक हमने जो जावास्क्रिप्ट या ये पढ़ा होगा स्कूल में कॉलेजेस में, वो आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा. यू आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट. तो लाइक बिकॉज इट्स इवॉल्विंग, इट्स नॉट कि वो चीज़ें रिलेवेंट होगी, बिकॉज इट्स इवॉल्विंग. ओके, आई थिंक Bhargav, yeah, someone will answer your question at the end of the session. Be there, huh? Raj. Yeah. So like scope. So basically scope क्या होता है? ये important, मतलब एक basically एक question बन सकता है freshers के लिए. And then if someone is able to answer the scope, then what is global scope, what is local scope, what is functional scope, and what is block scope, and that all may be a follow up question. So scope is basically जैसे हमने एक var a is equal to जैसे लिख दिया कहीं पे, तो ऐसा तो नहीं है ना हम उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं अपने कोड में. तो बेसिकली वो रीजन जहाँ पे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन से इज विद इन द स्कोप, वो उसके स्कोप में है. फॉर एग्जांपल अगर किसी में जावास्क्रिप्ट फाइल मैं लिख रहा हूँ, मैंने सबसे ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया like where a is equal to 10. So within this JavaScript फाइल के अंदर अंदर मैं इसको जहाँ चाहे वहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ. तो इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल है. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप, कि जहाँ जहाँ पे भी ये पूरा का पूरा फाइल है वहाँ वहाँ पे से मैं एक्सेस कर सकता हूँ. बट अगर विद इन फंक्शन में किसी चीज़ को लिख देता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फंक्शन सम और आई सेट की ऐड 5, एक नंबर को एक्सेप्ट करता है और उसमें एक दूसरा नंबर ऐड करता है जो नंबर मेरे पास अपने आप रखा है. तो विद इन दिस फंक्शन अगर मैं कोई चीज़ डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई रोट अप, यू कैन से append hello, and within this function I wrote a hello. तो अगर मैं उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड विद इन अ फंक्शनल स्कोप, विद इन अ फंक्शन. एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ पे बनता है, मे बी फॉर फ्रेशर्स और मे नॉट बी फ्रेशर, कई कई बार जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट इज वेरी फॉरगिविंग. लाइक आप जावा में ऐसे नहीं लिख सकते कि फॉर एग्जांपल आई इंट ए इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख दिया आपने, तो ये इंट को हटा नहीं सकते आप. आपको ए इज इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते, उसका डेटा टाइप मांगेगा ही मांगेगा, जावा जैसे होता है. बट आप जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिख सकते हो कि बिना वेरिएबल को आगे वैर लिखे ही आपने सीधे ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया. तो अगर इस तरीके से कोई हम वेरिएबल इंस्टेंशिएट करते हैं, तो दैट डिफॉल्ट गोज इनटू अ ग्लोबल स्कोप इन अ नॉन स्ट्रिक्ट मोड. तो ये एक बेसिकली एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि अगर, और इंटरव्यू क्वेश्चन में मे नॉट बी आस्क्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपसे कोई ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है ना पूछे, बट एक कोड दिखा के पूछ ले आपको कि एक फंक्शन के अंदर उसने एक वेरिएबल बना दिया ए और उसको फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहा है, लेकिन वेरिएबल के आगे वैर नहीं लिखा है. तो अब वो क्या होता है, जब वैर हम जैसा कुछ लिखते तो वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप में चले जाता है बेसिकली. तो इस तरीके के भी एक प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम लोकल स्कोप इज बेसिकली विद इन अ फंक्शन, जो कि हमारे पास है एक फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो वो एक्सेस होगा केवल फंक्शन के अंदर. और इसके अलावा अभी एक लेटेस्ट होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है बेसिकली लेट. ये भी एक बेसिक सवाल बनता है फ्रेशर्स के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर. तो वेर जो होता है, लेट जो होता है, इट ऑल्सो गिव्स अस अ ब्लॉक स्कोप विच was not there basically before 2015. तो 2015 के बाद ये जावास्क्रिप्ट में आया और मे बी 17, 18, 19 तक इसको सारे के सारे ब्राउजर्स ने सपोर्ट किया होगा. तो लाइक फॉर यू इट्स लाइक आपने वो दिन नहीं देखा होगा जब ये नहीं होता था, आप देखोगे तो हमेशा ही से था. तो यू मे नो बी कि वेट जो लेट है उससे हमें एक ब्लॉक स्कोप भी हो सकता है, लाइक विद इन अ फॉर लूप, विद इन सम इफ कंडीशंस वी कैन create a variable that is just scope to a specific block. So this is like a must know thing if you say you have coded a project in JavaScript or any kind of front end mern mean.
Okay, what is const? That is a const is like it is also a ES6, feature. So const is like I can declare a variable, I can assign it value only once. For example, if I said const a is equal to 5, और बेसिकली इसमें एक फंडा और है कि जब भी आप ना इस वेरिएबल को स्टार्ट करते हो तभी आपको इसको वैल्यू असाइन करनी होगी. अगर आप इसको वैल्यू उस समय असाइन नहीं करोगे तो यू विल गेट एन एरर. So const is like we can declare a variable, but throughout the program we won't be able to change the value of the variable. हम उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे. जो हमने असाइन कर दी वही रहेगी. और जब हम उसे डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10, तो वहीं पे हमें करना पड़ेगा. हम दो लाइन में नहीं लिख सकते कॉन्स्ट a एंड देन क्लोज सेमी एंड देन a इज इक्वल टू 10. हम ऐसे नहीं लिख सकते. तो दैट इज कॉन्स्ट. वी कैन असाइन इट एक वैल्यू, एक वेरिएबल जिस समय स्टार्ट करेंगे उसी समय असाइन करेंगे वैल्यू. उसके बाद उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती है. एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो देयर इज लाइक समथिंग इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप एंड समथिंग इज प्रिमिटिव. जैसे कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10, तो ये a ही है. अब हम लेकिन अगर कोई एरे है या कोई ऑब्जेक्ट है तो दैट इज एक्चुअली रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर मेमोरी. तो उसमें हम इज इक्वल टू वाला नहीं लिख सकते, लेकिन हम उस एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ फंक्शन पॉप फंक्शन से. उसमें हम उस एरे में कुछ ऐड कर सकते हैं, बट बेसिकली हम एक नई एरे असाइन नहीं कर सकते उस वेरिएबल में. दिस इज लाइक अ कॉन्स्ट. विशाल, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू आस्क समथिंग मोर? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक्स. चलो, ऐसी आपका फीडबैक इज मस्ट. हाँ, that will actually help me to improve. Okay, so this is more or less like what are the variable naming conventions. Few things are like rules, few things are I would say conventions. तो कुछ तो रूल्स होते हैं कि आप रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, एंड दैट ऑल दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू एट ऑल. बेसिकली आप वो कर ही नहीं सकते हो. अगर आप करोगे तो आपको सिस्टम एरर दे देगा. तो दिस इज लाइक अ मस्ट नो फॉर एवरीवन हु इज यूजिंग इट, और एटलीस्ट दे शुड नो कि ये वैलिड है या नहीं है, काइंड ऑफ थिंग. तो जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो नहीं हो सकते, जैसे इफ, एल्स, क्लास, ये सब वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं. जावास्क्रिप्ट वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर से, ये स्टार्ट नहीं हो सकते हैं. जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव भी हैं, जो हमने पहले किया था कि जावास्क्रिप्ट इन इटसेल्फ इज अ केस सेंसिटिव. नॉट ओनली वेरिएबल्स बट हर चीज केस सेंसिटिव ही है इस लैंग्वेज की. बट बेसिकली क्या होता है ना कि आई वुड से हियर कि एज अ प्रोग्रामर यू शुड हैव सम स्टैंडर्ड्स, लाइक कि आप एक वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन करोगे. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज, मतलब more or less I would say the variable should be able to express its purpose, and primarily we use camel cases in JavaScript for naming. लाइक जैसे नॉट अलाउड है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नॉट अलाउड का एक वेरिएबल बनाना है, तो आई कैन से नॉट अंडरस्कोर अलाउड. आई थिंक सी प्लस प्लस और सी में इस तरीके से ही का कन्वेंशन है बेसिकली नेमिंग प्रोग्रामिंग वेरिएबल नेम्स का. एंड जावास्क्रिप्ट में एन इज लोअर एन ओ टी देन ए इज कैपिटल अलाउड. सो समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वेंशन यू विल सी इन लाइब्रेरीज. लाइक बहुत सारा जो लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, नोड मॉड्यूल्स है, वहाँ पे आप देखोगे. तो दैट इज यू शुड ट्राई टू फॉलो. इंस्टेड ऑफ होता है ना कि कुछ भी वेरिएबल का नाम रख देते हैं, हमारी समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी फंक्शन का नाम रख देते हैं, देन इट्स मोर और लाइक कैमल. आई वुड से फर्स्ट, I don't know it's camel case or not, but first one, let alpha word should start with the lower one, and then others are like from capital one then lower. So this is like a basic, that is generally a
I would say industry standard instead of separating variables with underscores and those other things in JavaScript. Yeah, you can go to next slide. Okay, this is a very basic question. I think most of you may be knowing it. Do you know any, like, how many of you already know what is difference between double equal to and triple equal to in JavaScript? Can you type? I guess I know, क्योंकि ये सवाल बहुत ही बेसिक है और एक जगह पे भी मैं रिसेंटली कुछ क्लास में था तो जैसे ये पूछा तो मतलब ये ऐसा ही कुछ आया था इवेंट तो सब बच्चे एकदम से मैं जैसे नहीं होता मैं बताऊंगा मुझे पता है वाला तीन टाइप का हो गया था उस सिस्टम में। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंपैरिजंस। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो अगर हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं प्राइमरीली तो दैट इज लाइक इफ आई कंपेयर स्ट्रिंग वन विथ नंबर वन and I use triple equal to, it will return false. And if I compare, like if I say like this, what I mean to say is this is false basically. No, this is true basically, and this one is false. So second one is false and first one is true. What I have typed in the chat. So if there is a double equal to, it will just compare the values, and if it find them equal, it will return true. And triple equal to is like values should be same and the data type should also be same. That is like strict equality, and that is loose equality that we call. So if we are just comparing two things, by value they are same, double equal to will return true. If they are different, if they are by value different or they are by type they are different, that will return false in triple equal to case. So like most of the cases हमें ये recommended होता है कि triple equal to use करो, triple equal to use करो. That is like a standard I would say when we come to like commercial web development or this programming, like कंपनीज में जब हम कोड करते हैं, हिंदी में ऐसा कह सकते हैं, कमर्शियल वेब डेवलपमेंट या बड़ी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ट्रिपल इक्वल टू इज अ प्रेटी स्टैंडर्ड. And one follow-up question is like how it happens basically is जैसे कई सारी लैंग्वेज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप स्ट्रिंग को नंबर के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते. व्हाट आई हैव रिटन इन फर्स्ट लाइन, वो वहीं पे एरर दे देगी कि आप स्ट्रिंग को कंपेयर क्यों कर रहे हो नंबर के साथ, दिस इज नॉट अलाउड. बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना, ये अपने आप ही इट ट्राइज टू कन्वर्ट द थिंग. So it tries to convert the things into same type. It can convert. So जैसे so that is basically unique about JavaScript. So you may like it, you may dislike it, but this is something not available in Java or may not be available in most of the languages, strongly typed languages I would say. So this is how it is. So like one question that I would like to I ask like follow-up questions is which one do you think should be the fast one? Okay, yeah, go ahead. You can ask the question. Someone has raised the hand. Black Hydra. I don't know who is this. You can ask a question if you. HTML gaming, how to start the bro? Hello. Sorry, could you please repeat? Could you please repeat your question? Or type in the chat. Yeah, you can type your question in the chat.
I guess he has left due to some network issue. We can continue. He can ask his question whenever he joins again. Okay, the second follow-up question that I used to ask is, which one do you think should be the faster of the two? So like most of the people say the double equal to should be faster because it doesn't care, because सीधे सीधे वैल्यू चेक कर लेती हैं, बट आई ट्रिपल इक्वल टू इज बिट फास्टर बिकॉज इट जस्ट कि दोनों का अगर ये सेम टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं करता. इफ यू सी वन टाइम एक तरफ स्ट्रिंग दिख रही है एक तरफ नंबर दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली इट्स शॉर्ट सर्किट काइंड ऑफ थिंग. देयर इज नो नीड टू कंपेयर कन्वर्ट एंड दैट ऑल. बट लाइक इन फर्स्ट केस एक तरफ स्ट्रिंग है एक तरफ नंबर है तो डबल इक्वल टू पहले उनको एक सेम टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, फिर कोशिश करने के बाद इफ दैट इज सक्सेसफुल देन इट कंपेयर्स एंड देन रिटर्न द रिजल्ट. But in triple equal to it's a bit fast because it doesn't try to even convert them into same type. So that is like conversion is something that we call it in JavaScript, where they try to convert the variables from one type to different another type. Like when like many times you would be seeing these questions like in your interview, like 1 plus this, what is this? So this is like conversion. So it doesn't happen in the case of triple equal to. Yeah, you can go ahead to the next slide. So this is simple question. So when we are trying to compare if they are equal, then it's a double equal to, but we do not want to compare the type. And when we want to check if they are not equal, then we just use a not. So this is like a syntax where we how we can specify, so we want to check them for inequality. That is, or also we, if you want to check for the types, we can also like this one. So this is also like equal to or not equal to. We can also use if you want to go for a strict inequality kind of thing. I have typed in the chat. So this is also a operand that we can use.